Hello everyone. My name is Ars. My ID number is 24. My name is Janvi. My ID number is 32. My name is Riva and my ID number is 42. My name is Dia and my ID number is 27. My name is Nisa and my ID number is 29. Today we are going to explain you the practical 2 of software engineering, which is SDLC models, in which we are trying to explain you the model advantages, disadvantages and limitations of the model. Okay, so now I will explain about our first model, which is waterfall model. In the first, the waterfall model is a sequential and driven process where you must plan and schedule all your project before the working on the project. Each activity in this waterfall model is represented as the separate phase arranged in a linear order. So in the it has some following phases. First one is a requirement, second is a design, third one is the implementation. After implementation, there are testing, and after that deployment and maintenance. So this is the diagram of waterfall model. In the first phase, we have seen that this is the feasibility study. After feasibility study, another phase is a requirement specification, where you can require where client can client can explain about the requirement to the project or project manager. After second phase, third phase is the project design. In After that, there is a implementation where we can implement our project. In the After that, there are testing. In this phase, we test our model. After that, deployment and then maintenance. In this maintenance phase, use the project employee are easily maintained or change in the full model. So after the diagram, we have seen that each of these phase produce a one or more document that need to approve before the next phase begin. These phases are very likely to overlap and the feed information to each and other. So after that, we have seen some advantages, some application of our model. First one is that classical waterfall model is widely used in a software development process. Second one is that it provides a structure and approach to project management. Each phase should have been completed before moving to another phase. मीन्स जब एक फेज खत्म हो जाता है तो हम दूसरे आगे के फेज पे नहीं जा सकते, उसके बाद हमें उसके नेक्स्ट में जो फेज आता है उस पे ही जाना पड़ता है. सो वहाँ से हम रिटर्न नहीं हो सकते, मीन्स आगे ही जा सकते हैं. थर्ड वन इज द मॉडल इज अ बेनिफिशियल फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट इन द लॉन्ग ड्यूरेशन. And fourth one is that it helps identical potential risk and issue early in the development cycle. Means it in the waterfall model the risks are very high, so we have to check this. And fifth one is that it promoted documentation at each phase and which adds the maintaining a clear understanding. In this model, in every phase there are some document are in we have some document, so we can easily understand the model. Anyone can easily understand the model. Now after sixth one is it can be beneficial when working with clients. It is very useful when it is very simple and useful model. And who prefer linear and predictable development process, as it can provide a linear timelines. There are some in this waterfall model there are some advantages and disadvantages. So first advantage is easy and simple. In these advantages, our model is very easy and simple. So and also the waterfall model is the first model, and all the other models are dependent on the waterfall model. So and this is very easy to maintain. Also, second one is a use for small project. So waterfall model is based on the model we can use only in the small project. We can't use in the big project or complex project. Third one is a no overlapping. Means once we start the cycle of the waterfall model, we can't back to the first phase or second phase. We move to
third to fourth phase or fourth to fifth phase. After there are some advantages of these are the some advantages. Now I will explain about the disadvantages. First one is a not used for big project. As I told earlier, we can't use it for this model for big project or complex project. Second one is a can't move back. So as I told, we can't move back or traverse backwards. Third one is a high risk. When we start implementing our cycle, their risk will be very high, because in every phase we can't see any error or we can't see any mistake. Once a cycle is completed, in the maintenance phase, we will also know we should know the all mistake, or we can change in between. We can't anything change. We can't change anything. Fourth one is a poor for complex program. This is very poor, so we can't use for complex program. It is we can use only for simple and small program. So these are the waterfall model. Now I will hand over to my teammate Harsh, which he will explain about the iterative model. Misa give introduce a waterfall model. All waterfall model is a basic model. All the model depend on the waterfall model. I will introduce one more model. It is a iterative model. Iterative model बहुत सारे इटरेटिव को मेक करके एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो क्लाइंट की जो अपन रिक्वायरमेंट उसको बेसिस ऊपर बनाते हैं. हियर द रिक्वायरमेंट और क्लाइंट डिजाइन के आगे एक और पार्ट होता है जो एनालिस्ट पार्ट होता है, जिसमें हम रिक्वायरमेंट और एनालिस्ट को देखेंगे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट और किस बेस पे हम उनको रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे. डिजाइन पार्ट में हम जो भी रिक्वायरमेंट उसका कोड करेंगे, टेस्टिंग पार्ट में टेस्ट और इम्प्लीमेंट में पूरा चेक करेंगे. उसके बाद रिव्यू लेंगे, जो देखेंगे इफ द क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज फुलफिल और जो भी हमने बनाया उसके साथ फुलफिल हो रहा है उनकी रिक्वायरमेंट, तो हम वहाँ सॉफ्टवेयर कर देंगे. जो नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे. तो इधर से नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे, फिर से डिज़ाइन पार्ट में जाएंगे, फिर से कोड डिज़ाइन करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के लिए, टेस्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. ऐसे इटरेटिव साइकिल चलती रहेगी. तब तक चलती रहेगी कि जब तक ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो अपनी जो सॉफ्टवेयर बनाए है वो दोनों सही हो रहा है, तब तक हम चेक करते रहेंगे. और जो हो जाएगा उसके बाद एक आता है डेवलपमेंट पार्ट, जिसमें हम जो अपना सॉफ्टवेयर बनाया है उसको हम डेवलप करेंगे. उसके बाद एक और पार्ट आता है जो है मेंटेनेंस. जो अपने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको मेंटेन करेंगे. जो यूजर चेंज रिक्वायरमेंट हो गया, कोई फीडबैक देंगे, उनको हम करते रहेंगे, उनको मेंटेन करते रहेंगे. उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन अवर मॉडल. फर्स्ट इज अ वेब डेवलपमेंट मॉडल. बेसिकली जो इटरेटिव मॉडल होता है वो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है. वेब डेवलपर जो होते हैं यूजर अपडेट वर्जन रिलीज करते हैं एंड अलाउ टू कंटिन्यूस यूजर फीडबैक एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट. One more application in this model is a mobile app development. It is a similar to web development. Another one is a game developer. In the gaming industry, iterative model will be used in game developer will release alpha beta version and the user allow to continue changing the user requirement and the feedback. One is a e-commerce में कैसे कि जो शॉपिंग करने का अपना एक्सपीरियंस है, कोई एड्रेस है, उसको अच्छे से करने के लिए अपन उसको यूज़ करते हैं. और हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज़ होता है. और हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर के लिए क्या तो EHR सिस्टम है या अदर मेडिकल सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है. EHR सॉफ्टवेयर बेसिकली है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, और जो भी उसमें अलाउ करता है कि जो उसका एड्रेस है उसको हम बदल सकते हैं, उसको चेंजेस करने. ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है अपनी इटरेटिव मॉडल की. उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ इटरेटिव मॉडल. फर्स्ट इज आप इजीली प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं, इजीली टाइम मैनेज कर सकते हैं, પછી ऑपरेटिंग टाइम रिड्यूस कर सकते हैं. एंड देयर आर सम एडवांटेजेस इन इटरेटिव मॉडल. डिसएडवांटेजेस ऑफ इटरेटिव मॉडल. डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि मोर रिसर्च
मे बी रिक्वायर्ड, क्यों जितनी बार इटरेटिव होगा उतनी बार हमें रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। डिजाइन हम जितनी बार इटरेटिव करते रहेंगे उतनी बार डिजाइन का जो पार्ट है वो भी चेंज होता रहेगा हर बार। અને उसकी जो प्रोजेक्ट है अपनी उसकी जो डेट है हम ईयरली हम वो जो क्लाइंट है उसको हम नहीं कह सकते कि इस डेट पे हम अपना प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट है उसको रिलीज कर देंगे। એટલે हम एक ये भी डिसएडवांटेजेस है। and limitation of iterative model is it is not suitable for a smallest project because of जो स्मॉल प्रोजेक्ट होता है हम इटरेटिव ज्यादा करते रहेंगे तो उसका बजट भी बढ़ता रहेगा, उस वजह से ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू एंड माय फ्रेंड my teammate Diya give you introduce one model in software cycle. So I am going to explain the incremental model. So first, in the incremental model, we do not develop the whole software in one go. Instead, we cut it down into multiple standalone modules, which are performed one by one and are developed by using waterfall approach and further and with the previous increment each with the previous modules. First, the development team develops the code module of the software project, and then the other modules are developed one by one. Now, what is meant by core module? So, core module means that first the developers develop the module with the highest priority, and then the other modules are performed one by one. So, next we have diagram. So, first, requirements and satisfaction. So requirements of software are first broken down into several parts, that is several modules, and they are then performed one by one, so that the software is developed in an efficient way. Once the core features are fully developed, then the levels of capabilities are increased by adding new functions in the successive versions. Each incremental version is usually developed using an iterative waterfall model. Now, as successive versions are developed, they are then forwarded to the customer for the customer feedback. Now, once customer feedback is done, according to that, modifications are performed and then other modules are developed. After such processes, requirements are split into different versions in each successive increment. Now, next version is constructed and deployed at client side, at customer side, and after all the versions are completed, the last nth version is then deployed at the customer side, client side. Now we are going to see applications where the iterative models is going to use. So it is mainly used in leading software companies such as Microsoft Office, Windows, Microsoft Office and Windows. Then it is used where the requirements are superior with superior requirements. Further, it is used where the teams are not efficient or small teams are there. Then it is used when customer demands for the quick release of the project. That is quick release. Now, advantages of the iterative model. So it is fast. Then changes are easy to implement as we are going to send each version to the customer for feedback. Hence, changes are easy to implement version by version. After that, it is less expensive. Now, clients have clear idea about their project. After that, we have disadvantages. So, because of continuous iteration, its cost increases. Cost increases because of continuous iteration. Then issue may arise from the system design if all needs are not gathered properly. Then it takes lot of time and effort to fix issue in one unit if we have to fix issues from each and every unit. Then after every iteration step is distinct and does not flow into the next.
Hence, it might get difficult because not particular part is there in the previous step. So, and this model does not have any limitation. So now I would like to call Janvi for the next model. Okay, so now I am going to explain our now next model, which is prototyping model. It is a software development methodology that involves creating an initiate prototype of software product before developing the final project. That means we can explore our project फाइनल प्रोजेक्ट से पहले हम ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल में सब प्रोसेस करते हैं. The prototype is working model of software product that can be used to gather feedback of customers and design before final product. This model can help to developing software application and reduce the risk. The prototype can be developed using different methodologies such as throwaway prototyping, evolution prototyping, incremental prototyping, and extreme prototyping. Then there is the term which is software prototyping, that means the process or creating software application prototype that demonstrate the functionality of product under the development, but may not contain exact logic of this software application. So it has 6 phases. First is requirement analysis. In this phase, कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस होता है. नाउ देन गो टू सेकंड फेज विच इज क्विक डिजाइन. दिस फेज कंसिस्ट प्रिलिमिनरी डिजाइन or quick design, not exact design. Then prototyping. In prototyping, actual prototype is intended to support knowledge gain from the customer and client. It is a small, low-level working stage. Then customer evaluation. In this phase, customer evaluate which type of changes is required in this model. Then review and refine. You may want to improve the type that respond to user feedback and suggestion. And then implement product maintain. Before implement product maintain, कस्टमर इवैल्यूएशन के दौरान कस्टमर अप्रूवल होता है जिसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं कि किस फेज में हमें चेंज करना है. then customer develop, then test and then release होता है. And then which is such as type of prototyping model. There are 4 types: rapid throwaway prototype, evolution prototype, incremental prototype, and extreme prototype. So now there is some advantages and disadvantages of this model. So advantages is no risk of software loss. इसमें सॉफ्टवेयर लॉस नहीं होता क्योंकि क्लाइंट हर एक फेज में क्लाइंट का डिस्कशन होता है और इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं. सो आगे का फेज में नहीं जाता. देन टीम मेंबर्स इज इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्विक यूजर फीडबैक. इसमें यूजर के फीडबैक के आधार पे सारा मॉडल डेवलप होता है. देन देर आर सम डिसएडवांटेजेस. दिस मॉडल इज कॉस्टली because of after such one by one phases many changes are required, which is said by client. And prototyping is time consuming. ये मॉडल बनाने में टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि हर एक फेज में क्लाइंट की फीडबैक ली जाती है और उसमें चेंजेस किया जाता है. Customer test and many variation is there. Poor documentation is a result of changing customer needs. हम poor documentation बनाते हैं तो उसमें क्लाइंट को many changes होते हैं, वो फिर से हमें करने पड़ते हैं. Then there are many applications such as web development, mobile app development and product design. इसमें HTML, CSS में इसमें भी ये मॉडल काम आता है. और now next model, which is spiral model, which will explain Riva. I am going to explain the spiral model. Spiral model diagram looks like a spiral which has many loops. So it is called spiral model.
In this, the exact model of phases are not determined. It is depend on the customer. In this model, first gather all the requirements of the customer and then analysis it. It has many phases. The first phase is planning, in which the scope of the project is determined and then analysis is it. And the second phase is risk analysis. In this, the risk of the project is determined and then uh, 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 the third phase is engineering. In this phase, the software is developed based on the requirement. The fourth phase is evaluation. In this, the software is evaluated based on the customer's requirement. After this, the first iteration is completed and the next iteration is start from the planning phase. Now we see the diagram of the spiral model, which has four phases. The first one is objective determination and identify the alternative solution. In this, the all requirement of customers are gathered and then analysis it, and उसके बाद हम उसका जो भी possible solutions है उसको सर्च करेंगे, देखेंगे और उसको evaluate करेंगे. The second phase is identify and resolve risk. In this हम जो भी रिस्क है वो देखेंगे और फिर उसको रिसोल्व करने की ट्राई करेंगे. एंड देन द थर्ड फेज इज डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट. हमने इस फेज में जो भी रिस्क है उसको कंप्लीट कर लिया होगा, एनालिसिस कर लिया होगा, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट वर्जन को डेवलप करेंगे. एंड द फोर्थ फेज इज रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. इन दिस हमने ये सारे फेजेस कंप्लीट कर लिए होंगे, फिर हम उस प्लान को रिव्यू करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में. इस फेज के बाद हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके बाद हम उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे. मतलब जो फीडबैक मिलेगा उसके बेसिस पर हम नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ट्राई करेंगे. दिस स्पाइरल मॉडल इज called meta model because it has a combination of multiple model, like it has a prototype and also it is iterative model. Here this angular dimension shows us the progress of the project. अगर हम ये हमें 180 डिग्री देगा तो हम ये मानेंगे कि इसमें 2 फेजेस कंप्लीट हुए होंगे, और अगर ये 360 डिग्री होगा तो इसमें 4 फेज कंप्लीट हो चुके होंगे. नाउ वी सी द एडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल. फर्स्ट एडवांटेजेस इज रिस्क हैंडलिंग. ये इसका मेजर एडवांटेज है कि इस मॉडल में हम कोई भी रिस्क होगा उसको हैंडल कर सकते हैं. इट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट. देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन. इसमें कस्टमर को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक हम उसको फिर से इम्प्लीमेंट करते ही रहेंगे. जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा और उसको और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए होगा तभी हम इसको स्टॉप करेंगे. द डिसएडवांटेजेस इज कॉस्ट. इसमें जितने भी स्पाइरल्स ज़्यादा होंगे तब तक हमें उसको करना पड़ेगा, तो इसका एक कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगा. सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. देन दिस मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज अगर हम यहाँ पे कोई एरर आई तो हमें फिर से चारों फेजेस को इवेल्युएट करना पड़ेगा. एंड देन इट हैज़ टू मच रिस्क एनालिसिस. तो इसमें बहुत सारे रिस्क को एनालिसिस करना पड़ेगा. इसके लिए हमको एक्सपर्ट टीम चाहिए होगी, क्योंकि अगर कोई ऐसा वैसा होगा तो वो कुछ और करेगा और फिर से रिस्क तो वही का वही रहेगा. एंड द लास्ट वन इज टाइम. इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमें नेक्स्ट साइकिल के लिए चारों फेज को फिर से रिपीट करना पड़ेगा. So this is the our spiral model. Now my friend Misa will explain us the RAD model. Now I will going to explain about the RAD model. RAD model stands for the Rapid Application Development. Is based on a iterative development and prototyping with a little planning based. You develop a functional modules in parallel for faster product delivery. There are some in RAD model. There are some phases. First one is a business modeling. Second one is a data modeling. Third one is a process modeling.
and fourth one is the application in generation. Fifth one is the testing and cutover. So now I will explain the diagram. In the diagram, first we check a requirement planning. After that, move on from second phase, which is prototyping. After prototyping, the cycle is continuously going to work. After prototyping, testing is invent. After testing, refine, and this cycle is continuous. After once completed this cycle, there are going to construction mode. Construction phase. After this, our project is done, and it is going to cutover phase. So there are also some. After that, the R&D model is stand for changing requirement, reduce a development time, and increase the reusability. But it can be complex to change and manage. The R&D model is great for system that need to be produced in a short time and have a known requirement. So now I will explain about the application of R&D model. The first application is a coding done by using automation, and after that it is converted into a actual desired output. This method is called a prototype. Now I will explain about the advantages and disadvantages of a R&D model. So first advantage is a reduced development time. R&D model is reduced the development time. After that, second one is allow customer feedback. In R&D model, regular based customer feedback is taken. Third one is flexible to change. R&D model is very easy to change. We can easily change and add some important things into any phase. Fourth one is handle large project. R&D model is handle large project. So it is not that R&D model is not work with the hard or complex project. After now I will explain about the disadvantages. First, disadvantages is require more resources and money. So R&D model is a costly with compared to any other models. Second one is a limited applicability. Third one is a high experts. In the R&D model, every employee can have a high expectation for their personal lines. Fourth one is the requirements. Fifth one is the code documentation issues. There are also some code documentation issues in R&D model. Sixth one is can't use for small project. We can't use the R&D model for small project. We must be used for the complex or large project. Now I will hand over to my teammate Hers. He will explain about the V model. I will introduce V-shape model in software development cycle. In software development cycle में दो पार्ट होते हैं, एक वेरिफिकेशन पार्ट और एक वैलिडेशन पार्ट होता है. Here this is a verification part and then is a validation part. V model is an extension of waterfall model. All the requirement are gathered at the start. You cannot change. The वेरिफिकेशन वैलिडेशन में जो कॉरस्पॉन्डिंग टेस्टिंग फेज होता है, जो ये डेवलपिंग पार्ट है और ये टेस्टिंग पार्ट है, वो पैरेलली चेक होता है. और उस आप ऐसे ग्राफ में भी देख सकते हो. हियर रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो क्लाइंट होते हो, जो उनकी जो रिक्वायरमेंट हो इधर होती है. हाई लेवल डिजाइन में लो लेवल डिजाइन में एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको. जो आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, उसका जो कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, वो हाई लेवल में आता है. और उसका जो फ्लोर है जो बिल्डिंग का, वो सब पार्ट एक हाई लेवल में आता है, जो उसको सिस्टम डिजाइनिंग बन कहते हैं और आर्किटेक्चर डिजाइनिंग बन कहते हैं. एक और डिजाइनिंग पार्ट होता है जिसको हम मॉड्यूल डिजाइनिंग होते हैं, उसमें लो लेवल डिजाइनिंग में आते हैं. जैसे कि कोई बिल्डिंग के में फ्लोर है, उसमें जो रूम है वो मॉड्यूल डिजाइनिंग कह सकते हैं. फिर आता है कोडिंग पार्ट, जो अपनी रिक्वायरमेंट हो उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो कोडिंग पार्ट में आता है. और पैरेलली वो चेक होता है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, कि हम जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है अपनी, वो देखते हैं. उसके बाद आता है एक्सेप्टेबल टेस्टिंग, कि अब इसको एक्सेप्ट हो सकता है कि नहीं, वो उस इसमें आता है. Now the application of V-shape model. V-shape model should be used in a small or medium project where the requirement is clear and easily understand. It not be used for a big or a complex project. V-shape model में और भी होता है कि simple technique resources
चाहिए और और उसके लिए एक्सपर्टीज रिसोर्स की भी जरूरत होती है. नाउ द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द वी शेप मॉडल. एडवांटेजेस सिंपल, इजी टू यूज, स्मॉल प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा कि स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल है. आप रिक्वायरमेंट इजीली अंडरस्टैंड और फिक्स है. हियर द वन मोर एडवांटेजेस इज प्रोएक्टिव डिफेक्टिव टेक्निक. प्रोएक्टिव डिफेक्टिव ट्रैकिंग. जो मॉडल होते हैं में दो ट्रैकिंग होते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव. અને एक वी मॉडल ही ऐसा है जिसमें प्रोएक्टिव डिफेक्टिव टेक्निक का यूज होता है ना, अदर मॉडल में रिएक्टिव होता है. उन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि प्रोएक्टिव में कैसा है कि जो आप इम्प्लीमेंट पार्ट है और टेस्टिंग पार्ट है आप पैरेलली चेंज करते हो, और जो दूसरे मॉडल में हो सब लास्ट में चेक होता है टेस्टिंग पार्ट, और जो कोई गलती है तो फिर से वो डिजाइन पार्ट में चला जाता है. एक बिग एडवांटेजेस है अपने बाय यूजिंग वी शेप मॉडल. અને इजीली कंपोनेंट चेकिंग कर सकता, हर एक पार्ट इजीली कंपोनेंट, मैंने बोला जैसे इम्प्लीमेंट पैरेलली हो रहा है. Disadvantages of V model: not good for a big project. As I can see, not good for a big project, complex project के लिए अच्छा नहीं है. No feedback, so less scope of changing. जैसे कि पैरेलली चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत फीडबैक यूजर के जैसे भी आए ऐसा चेंज कर दिया. वेरी रिजिड एंड लिस्ट फ्लेक्सिबल, एंड ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है फिक्स है, बस उसके लिए आप चेंज नहीं कर सकते. एंड द लिमिटेशन ऑफ V शेप मॉडल इज V शेप मॉडल नॉट बी यूज फॉर अ बिग और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट. Thank you, Nayaru. And my friend Dia will give introduce one model in SDLC cycle. Now I am going to explain Agile model. So the Agile process model encourages continuous iteration development and testing. Each incremental part is developed over an iteration, and each iteration designed to be small and manageable so it can be completed within a few weeks. Each iteration focuses on implementing a small set of features completely. It involves customers in the development process and minimizes the documentation by using informal communication. Now, Agile development considers the following. Requirements are assumed to change. The system evolves over a series of short iterations. Customers are involved during each iteration, and documentation is done only when needed. Now, Agile is the great with changing requirements. Some common Agile methodologies are Scrum, Extreme Programming, and Kanban. Now, Scrum. So, Scrum is one of the most popular Agile methodology. Scrum consists of sprint, and each sprint works between 2 to 4 weeks and is preceded by planning. So you cannot make change after the sprint activities have been decided. Now, extreme programming. So extreme programming works between 1 to 2 weeks, and it uses pair of programming, test driven, continuous iteration, small releases, and simple software design. Then Kanban. Kanban focuses on visualization. If any iterations are used, they are kept very short. Now, here comes with the diagram of the Agile model. So, first is brainstorming. So, in brainstorming, requirement gathering is done. Once the definition of project is defined, then one must explain the business opportunities and the time to build the project, so that we can evaluate the economic and technical feasibility of the project. Then comes designing part. Once the project is identified, the work with the stakeholders to define requirements gets started. Then comes development. Here the construction or working on the project gets started, and the team works efficiently for that. Then comes quality assurance. Here testing part is done. Here the testing of the project is done so that and fixes the bugs in the code. Then deployment. So in deployment, in this phase the team issues a product for users' work, and after releasing they get feedback from the customer so that they can improve their project. Application of Agile model, that is software development, project management, startups, marketing, research and development, product development, customer satisfaction, customer support, collaborative team, and many more. Then comes the advantages of the Agile model, that is Agile model decreases the amount of time to yield individual system features, and its disadvantages is that documentation is minimal for an Agile methodology strategy and requires a well-versed cross-functional team.
Me and my teammates explain each and every SDLC models from waterfall to agile. So from today's scenario, agile is more useful other than other models in IT industries. Thank you.